Hey guys, welcome back to my channel. This is Arushi, and if you're watching this face for the first time, welcome to my channel. Please consider subscribing to my channel after watching this video, and if you have already subscribed, thank you so very much for sticking around. So for today's video, I'm going to be doing another self-portrait ideas. I have done one such video in the past that has received so much love from you guys. I got so many compliments from my friends and all my subscribers. Thank you very much for loving that video, and like a return gift, it is the second part that I'm doing today, and I hope कि ये tips and tricks जो मैं आपके साथ share करती हूँ वो आपके लिए helpful हो. And if you decide to recreate any of these pictures or use my ideas, don't forget to tag me in your pictures. I love watching the recreations, and I love knowing that these things are helpful to you guys. So yeah, without further ado, let's just get started with the video. Hey guys, so for the first photo, I'm in my living room and I'm just sitting on a sofa. For this photo, I have a theme in my mind that is work from home kind of atmosphere create करने का. So I'm on my sofa, and for the props, I have my laptop and some apples and papad. And also I took out my very old office specs जो कि मैं पहना करती थी. अभी इसकी पावर ज़्यादा हो गई है तो मुझे इसे दोबारा से बनने देना है. For the attire I am wearing my office formal shirt जिसको मैंने आयरन नहीं किया है because let's be real, हम लोग आयरन नहीं करते हैं जब वर्क फ्रॉम होम ही होना है तो इतना पता नहीं लगता ना जूम कॉल्स पे. And नीचे I am wearing my shorts. Oh dear, the pictures turned out really nice. Have a look. I really like them, and मैंने मम्मा को भी दिखाई. मम्मा really likes them. So quick change of outfit and the background too. So for the outfit, I have changed into this yellow long t-shirt top kind of thing. Sorry, not t-shirt, it's a shirt top kind of thing. And I am in my drawing room. I'll quickly show you the setup now. So this is what we are working right now with. मैंने tripod को एक टेबल पे रख दिया है थोड़ा हाइट के लिए क्योंकि मैं ऊपर से शॉट लेना चाहती थी. एंड आई हैव दीज टू टायर्स. इट इज़ एक्चुअली अ टेबल जिसका टॉप मैंने हटा दिया है फ़िलहाल के लिए. ये टायर्स मैंने खुद ही पेंट किए थे बहुत साल पहले. सो अब इनके बीच में तो छेद है तो मैंने इसमें 3-4 कुशन्स भर दिए हैं. सो आई एम एबल टू सिट ऑन दीज टायर्स. एंड मैं अभी एक पिक्चर पॉप आउट कर दूँगी यहाँ पे. विभा आनंद एक एक्ट्रेस हैं, अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. उनकी एक फ़ोटो मैंने देखी थी. सिंस देन आई हैव बीन मीनिंग टू टेक दिस पोज बिकॉज मेरे पास भी ये 2 टायर्स हैं और उनकी पिक्चर मैं डेफिनेटली रिक्रिएट कर सकती थी. सो लेट्स सी हाउ दिस गोज. सो मेरे फ़ोन में 3 seconds का टाइमर लगा है. सो आई हैव टू बी रियली क्विक with the positions and everything. So I think I have the shot. मुझे मेरी पसंद का शॉट मिल गया है. अभी I was just going through them and I really like how the pictures are turning out. One thing I would like to mention here कि जो poses मैं करती हूँ वो kind of मतलब hit और miss वाली चीज़ होती है.
मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करती हूँ कि कौन सा एंगल या कौन सा पोज अच्छा लग रहा है। एक काफ़ी आइडिया हो गया, बिकॉज मैं काफ़ी लेती रहती हूँ ये फ़ोटोज़, तो काफ़ी आइडिया हो गया कि कौन से एंगल्स वगैरह अच्छे लगते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं एंगल्स पे एक वीडियो बना दूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। So for the next pose self-portrait idea, I'm again in my drawing room and I'm really loving this mood light. So I thought of doing another pose with this. So I am on the table, the tire table. It has a glass top. ये ऐसा top है इसका. So the easy pose is कि मैं अपने just this ये जो अभी आप देख रहे हैं in the video, this is the sort of pose that I'm trying. So you see there is an illusion created, ये यहाँ पे जो shadow create हो रही है. So I'm going to click these poses. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझको ये, आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं. So yeah, let's try some of these poses now. So कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. First ये कि हमारा हाथ ऐसे करके नहीं आए. This looks really bad in pictures. So always like keep your hand like this and try to pose. और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये टायर टेबल पे कर रही हूँ. आप किसी भी नॉर्मल ग्लास टेबल पे इस पोज को ट्राई कर सकते हैं. ये द आइडिया जो है ये डबल इमेज क्रिएट करने का, ये सेम आएगा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट आई गॉट. For the next shot, I have painted my hands with all different colors. So when you are picking the colors, be sure to pick out very bright colors, so आपकी picture और उभर के आएगी. And ये मेरे सामने एक tripod पे मेरा दूसरा phone set है. So I'm just going to like pose and try to frame my face around these colorful hands. So I'm doing that. So I think I have got the picture and बहुत ही प्यारी कलरफुल पिक्चर आई है. So have a look. So I hope you like the video and yeah, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आप इन आइडियाज को यूज करके अपनी कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, डोंट फॉरगेट टू टैग मी. द हैंडल ऑफ फेसबुक पेज एंड द इंस्टाग्राम पेज इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. So do follow me there and hit the subscribe button if you haven't already. Like this video if you like this video. Yeah, and share it with your friends. You know the drill. I will see you soon in another video, very soon actually. And yeah, till then, take care. Bye bye.